Student, today we study about Legender's duplication formula, which is 2 to the power 2n minus 1 multiplied by gamma n multiplied by gamma n plus 1 by 2 is equal to root pi multiplied by gamma 2। आज हम लोग लीजेंडर्स डुप्लीकेशन फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। लीजेंडर्स डुप्लीकेशन फार्मूला है 2 to the power 2n minus 1 multiplied by gamma n multiplied by n plus 1 by 2 gamma is equal to root pi multiplied by gamma 2n। So now we start proof of Legendre duplication formula। Since we know that form of beta function is 0 to pi by 2 integral 0 to pi by 2 sine to the power 2n minus 1 theta multiplied by cos to the power 2n minus 1 theta d theta is equal to 1 by 2 beta mn। We know that this is the another form of बीटा फंक्शन। आप जानते हैं बीटा फंक्शन की अनदर फॉर्म है इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट 0 to pi by 2 ऑफ sin to the power 2n minus 1 theta multiplied by cos to the power 2n minus 1 theta d theta is equal to 1 by 2 beta mn। We know that। Now also we know that beta function is symmetrical since beta function is symmetrical, so that is we know that beta mn is equal to beta nm। Therefore above integral can be written as integral between the limit 0 to pi by 2 sin to the power 2n minus 1 theta multiplied by cos to the power 2m minus 1 theta d theta is equal to 1 by 2 beta n। So this is second equation। आप जानते हैं कि बीटा फंक्शन सिमेट्रिकल होता है, दैट मीन्स बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एन एम है, यानी एम और एन को आपस में अगर हम रिप्लेस कर देंगे तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो हियर वी इंटरचेंज एम टू एन, एम को m में बदल दिया गया है। So here 2m minus 1 this can be written as 2n minus 1, here 2n minus 1 can be written as 2m minus 1, here beta mn is equal to beta mn because beta mn is equal to beta mn। Now we put here n is equal to 1 by 2 in equation second। आप देख सकते हैं सेकेंड इक्वेशन में m के प्लेस पे 1 by 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। So when we substitute here m is equal to 1 by 2, that means we put here 2m is equal to 1, that is 2m minus 1 is equal to 0। आप देख सकते हैं जब यहाँ पर m के प्लेस पे 1 by 2 पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में तो 2 को लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m is equal to 1 होगा, 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफॉर्म करेंगे 2m minus 1 is equal to 0। Now we put here in power of cos theta 2m minus 1 in place of 2m minus 1 we put here 0। So we know that if the power of this is sin to the power 2n minus 1 theta and cos to the power 0 theta d theta, and on the right hand side we put in place of beta nm, in place of beta n and m is 1 by 2 here। Now we know that power of cos theta is 0 here, so this is equal to 1, so we put here in place 0 to pi by 2 sin to the power 2n minus 1 theta and this is equal to 1, and the right hand side we know that relation between beta and gamma function, that is beta mn is equal to gamma n divided by gamma m plus n, so this can be written as gamma n gamma 1 by 2 divided by gamma n plus 1 by 2। Here we use relation between beta and gamma function since we know that beta mn is equal to gamma m gamma n divided by gamma
m प्लस n. सो यूज दिस फार्मूला इन द राइट हैंड साइड. आप देख सकते हैं यहाँ पर बीटा एन 1/2 है और हमको पता है बीटा और गामा फंक्शन में रिलेशन होता है बीटा एम एन इक्वल टू गामा एन डिवाइड बाई गामा एन प्लस एन. यहाँ m के प्लेस पे n है और n के प्लेस पे 1/2 है, तो इस फार्मूले में m के प्लेस पे n और n के प्लेस पे 1/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा गामा 1/2 अपॉन डिवाइड बाई गामा n प्लस 1/2. We suppose that this is equation third. Now we put here, we again taking equation second. So we put here n is equal to n in equation second. आप देख सकते हैं जो इक्वेशन सेकेंड है इसमें बोथ साइड में m और n दोनों को इक्वल पुट करेंगे, यानी n के प्लेस पे m या m के प्लेस पे n सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. सो लेफ्ट हैंड साइड कैन बी रिटन एज इंटीग्रल बिटवीन द लिमिट 0 to π/2 एंड sin to the power 2n minus 1 and cos to the power 2n minus 1 theta d theta is equal to, here right hand side is 1/2 and beta n m and m both are equal, so this can be written beta n m. Now we can see here in the left hand side this power of sine and cos both are same, so we multiply in this integral in the numerator and denominator both 2 to the power 2n minus 1 divided by 2 to the power 2n minus 1, and here we write sin to the power 2n minus 1 theta multiplied by cos to the power 2n minus 1 theta d theta. This is equal to, here we write 1/2 beta n n. आप देख सकते हैं जो इक्वेशन सेकेंड है इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में m के प्लेस पे n सब्स्टिट्यूट किया गया है. तो लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रल साइन के अंदर sin की पावर 2n minus 1 theta multiplied by cos to the power 2n minus 1 theta है. Here we put in place of m is n here, and in the right hand side we put in place of m is n here. So we can see that in the left hand side inside the integral the power of sin and cos both are same. Here the power is 2n minus 1. So multiply inside the integral in numerator and denominator by 2 to the power 2n minus 1 divided by 2 to the power 2n minus 1. Now we can see that in the numerator, this 2 to the power 2n minus 1 sin theta to the power 2n minus 1 and cos theta to the power 2n minus 1. So this can be written as 2 sin theta cos theta whole power 2n minus 1 divided by this 2 to the power 2n minus 1 d theta, and on the right hand side this is 1/2 beta n n. आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रल साइन के अंदर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर में 2 sin थीटा और cos थीटा तीनों की पावर सेम है, तो इसको ब्रैकेट में लिख के 2 sin थीटा cos थीटा की होल पावर 2n minus 1 लिख सकते हैं. नाउ वी नो दैट द फार्मूला sin 2a this is equal to 2 sin a cos a. So here we use this formula sin 2a is equal to 2 sin cos a in the numerator inside the integral. So we can write this here we can write this 2 to the power 2n minus 1 is constant with respect to theta, so it will be outside the integral sign. So here we can write 1 upon 2 to the power 2n minus 1, and here this can be written as sin to the power 2n minus 1 or 2 theta d theta is equal to 1/2 beta n n. आप देख सकते हैं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा ये sin 2 थीटा के इक्वल होता है, तो इसके प्लेस पे sin 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करा है, और 1/2 की पावर 2n minus 1 दिस इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो इट विल बी आउटसाइड द इंटीग्रल साइन. नाउ वी पुट हियर in the left hand side put 2 theta is equal to t. So we differentiate this with respect to t, so we get 2 d theta upon dt is equal to 1. So from here we can write
d theta is equal to 1 upon 2 dt. Now we'll change the limit here. When we take lower limit x equal to 0, when we take lower limit theta is equal to 0 here, so and theta is equal to 0, so we get here because theta is equal to t by 2, so we write t is equal to 0 here. When we take upper limit, that is theta is equal to pi by 2, so we get here t is equal to 2 into pi by 2, so 2 is cancelled, so this is pi. So we can see here corresponding to lower limit theta is equal to 0, t is equal to 0, and corresponding to theta is equal to pi by 2, we get t is equal to pi. आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 थीटा को t सब्स्टिट्यूट किया गया है, इसको डिफरेंशिएट करना है t के स्टेप में, तो 2 कांस्टेंट हो गया, थीटा का डिफरेंशिएशन t के स्टेप में d थीटा अपॉन dt होगा और t के स्टेप डिफरेंशिएशन 1 हो गया। यहाँ से dt को राइट हैंड साइड ले गए, 2 को भी राइट हैंड साइड ले गए, तो d थीटा की वैल्यू 1 अपॉन 2 dt आई। Now we convert the limit according to t, so we put here you can see that lower limit of theta, that is 0, so corresponding to theta is equal to 0, we get here t is equal to 0, and when theta is equal to pi by 2, that is the upper limit, so we know that t is equal to 2 theta, so put here theta is equal to pi by 2, so 2 is cancelled out, so t is equal to pi. That means corresponding to limit theta is equal to pi by 2, we get theta is t is equal to pi, and corresponding to theta is equal to 0, we get t is equal to 0. So we put in the left hand side, so we put here in the left hand side 1 upon 2 to the power 2n minus 1, 1 upon 2 to the power 2n minus 1, and here we put inside the integral this 2 theta is equal to t, and in place of d theta this is 1 upon 2 dt, so we can write sine to the power 2n minus 1 t and dt upon 2, and in the left and the lower limit corresponding to theta is equal to 0, we get t is equal to 0, and corresponding to theta is equal to pi, we get t is equal to pi here. And on the right hand side we put here 1 by 2 beta n n. Now आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 2 थीटा के प्लेस पे t सब्स्टिट्यूट किया गया है, d थीटा के प्लेस पे 1 by 2 dt सब्स्टिट्यूट किया गया है, करस्पॉन्डिंग टू लिमिट थीटा इज इक्वल टू 0, दैट इज द लोअर लिमिट t इज इक्वल टू 0 है, तो उसको सब्स्टिट्यूट करा है, और यहाँ अपर लिमिट करस्पॉन्डिंग टू थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, t इज इक्वल टू पाई, सो वी पुट हियर t इज इक्वल टू पाई. नाउ वी कैन सी हियर in the left hand side this 1 by 2 is constant, so it will be outside the integral sign, so we write here 1 by 2 multiplied by 1 by 2 to the power 2n minus 1, here we multiply 2 1 by 2, and inside the integral we can see here this is 0 to pi sine to the power 2n minus 1 t dt is equal to 1 by 2 beta n. So from left hand side and right hand side we can see this 1 by 2 is cancelled out, so we get here 1 upon 2 to the power 2n minus 1 multiplied by integral 0 to pi and sine to the power 2n minus 1 t dt, this is equal to beta n n. Now here we use property of definite integral, since we know that if 0 to 2a fx dx, this is equal to 2 times 0 to a fx dx if fx is even function, and this becomes 0 if fx is odd function. So here we use this property 0 to 2a fx dx, that is 2 times 0 to a fx dx if fx is, here we can for this here if f 2a minus x is equal to fx,
This is the property here. If the integral of fx between the limit 0 to 2a, so we can write this is equal to 2 times integral of fx between the limit 0 to a if f2a minus x is equal to fx. Here we can see in place of 2a this is pi, so and in place of fx this is ft, so here ft is equal to sine to the power 2n minus 1t. So first we write here f2a minus x, 2a is here pi, so this pi minus t, so this can be written as f2 multiplied by pi by 2 minus t. If ye 2 cancel out, so this gives pi here. So we can write this here when we put here pi minus t in place of t, so this is sine to the power 2n minus 1 pi minus t. And we know that sine 180 minus theta, this is equal to sine theta, so this can be written as sine to the power 2n minus 1 t, and this is equal to f pi minus t, and this is equal to ft. So we can apply here this formula. So the limit in the left hand side is 1 upon 2 to the power 2n minus 1 multiplied by 2 times 0 to pi by 2 here, and this sine to the power n minus 1 t dt, and on the right hand side we can see relation between beta and gamma function, that is gamma n divided by gamma n plus n. We use the relation between बीटा एंड गामा फंक्शन. आप देख सकते हैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में इस डिफरेंट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी का यूज किया गया है. एफ एस का इंटीग्रल बिटवीन द लिमिट 0 टू 2a ये इक्वल टू होता है 2 टाइम्स 0 टू a इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, एंड इफ ये तब इक्वल 2 टाइम्स होगा अब एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो. सो यहाँ पर पाई है, पाई की जगह पे आप इसको 2a सपोज करेंगे, तो 2a माइनस एक्स के प्लेस पे यहाँ t का फंक्शन है, तो ये पाई माइनस टी हो गया. तो इसको f पाई माइनस टी जब निकालेंगे तो f 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस टी लिख सकते हैं. 2 कैंसिल होगा, ये पाई माइनस टी बनेगा. तो t के प्लेस पे पाई माइनस टी रिप्लेस करेंगे, राइट हैंड साइड में पाई माइनस टी होगा. अब साइन 20 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन की पावर 2n माइनस 1 टी हो गया, यानी f पाई माइनस टी एफ टी के इक्वल है. सो वी अप्लाई हेयर दिस फार्मूला of definite integral, property of definite integral. So this limit will be half, so and 2 will be multiply outside the integral sign. So this is, now we can take this 2 in the goes to the denominator, so power of 2 will be 2n minus 1, so this can be written as 2n minus 2. So here we can write power of 2, that is 2n minus 2, and here this is integral 0 to pi by 2 sine to the power 2n minus 1 t dt, and the right hand side we can see here this is gamma n square divided by gamma 2n. Now we multiply this 2 to the power 2n minus 2 in the right hand side, so we get here integral 0 to pi by 2 sine to the power 2n minus 1 t dt, this is equal to 2 to the power 2n minus 2 multiplied by gamma n whole square divided by gamma 2n. Now suppose that this is the equation 4, we can see this is the equation 4. Now comparing the equation 3 and 4, we get the actual Legender's duplication formula. So from equation 3rd and 4th, we can write, we can see here both in equation 3rd and 4th left hand side are equal, so right hand side will be also equal. So here we can write from 3rd and 4th, we can write 1 by 2 gamma n gamma 1 by 2 divided by gamma n plus 1 by 2, this is equal to 2 to the power 2n minus 2 multiplied by gamma n square divided by gamma 2n. So solving this equation here, solving
this equation, so we can see here this gamma n cancel by this square, and here this 2 multiply in the right hand side, so this gamma 1 by 2, this can be written as root pi, because the value of gamma 1 by 2 is equal to root pi upon gamma n plus 1 by 2, and this 2 multiply in the right hand side, so 2 multiplied by 2n minus 2, and gamma n divided by gamma 2n. Here the power of 2 is 1, so this power will be added because here the base is same and in multiplication sign, so this is root pi divided by gamma n plus 1 by 2, here power will be added, so 2n minus 2 plus 1 gamma n divided by gamma 2n. Now we do cross multiply both sides, so we get here, so root pi divided by gamma n plus 1 by 2, this is equal to, this can be written as 2 to the power 2n minus 1 gamma n divided by gamma 2n. Now we multiply this cross multiplication, so we write this 2 to the power 2n minus 1 multiplied by gamma n multiplied by n plus 1 by 2 is equal to root pi and gamma 2n. So this is the Legendre duplication फार्मूला. आप देख सकते हैं यहाँ इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इसलिए राइट हैंड साइड इक्वल होंगे, तो राइट हैंड साइड को इक्वल कर दिया गया, इसलिए 1 by 2 गामा एन गामा 1 by 2 अपॉन गामा एन प्लस 1 by 2 इज इक्वल टू हो गया 2 की पावर एन 2n माइनस 2 गामा एन होल स्क्वायर अपॉन गामा 2। अब न्यूमरेटर में बोथ साइड में आप देख सकते हैं गामा एन से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और गामा 1 by 2 की वैल्यू रूट पाई होती है। इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, तो ये गामा 1 by 2 इज इक्वल टू रूट पाई डिवाइड बाई गामा एन प्लस 1 by 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 2n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई गामा एन डिवाइड बाई गामा 2n। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड में पावर न्यूमरेटर में पावर 2 की पावर सेम है, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2n माइनस 2 है, बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई में है, पावर ऐड होंगी, सो 2 की पावर 2n माइनस 2 प्लस 1 गामा एन डिवाइड बाई गामा 2n। 2n minus 2 plus 1, this is equal to 2n minus 1. Now we multiply this cross multiplication, so this is the Legendre duplication formula. अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।